Hi guys, welcome to Pratham. My name is Sakshi Kaushik and I will be dealing with the topic Directive Principles of State Policy today. This is one of the important part of the Constitution. Moving to my very first slide, you can see in the introduction that it is part 4 of the Constitution given under Article 36 to 51. So आपको ये समझना है कि Constitution में there are 25 parts, out of which part 4 talks about directive principle of state policy. In the same way, when the Constitution came into force, there were 395 articles, but presently there are 467 articles क्योंकि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती रहती है. इट इज नॉट अ रिजिड डॉक्यूमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, इट इज अ रिजिड कम फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट. वेन एवर देर इज एनी नीड to amend the constitution, that can be done. So we can say part 4 of the constitution talks about directive principles of state policy, whereas article 36 to 51 is the article number which talks about DPSP. एंड फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं पैरेलली बात करूं, सो आप सब जानते हैं दे आर बेसिक राइट्स विच नो अदर पर्सन कैन टेक अवे फ्रॉम अस, नॉट इवन स्टेट कैन टेक अवे फ्रॉम अस. बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो स्टेट के अगेंस्ट एक्सरसाइज होते हैं. सेम इज द सिचुएशन विद DPSP. If you have studied fundamental rights and if you have gone through Article 12 of the Constitution, so students, Article 12 जो Constitution का है, it defines states. तो जो Article 12 define कर रहा है state, ये आपको समझना होगा, it is basically defining the definition of state only for the part 3 and part 4 of the Constitution. कहने का मतलब क्या है, जो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के आर्टिकल्स हैं उसमें जब जब स्टेट वर्ड यूज होगा, सो द रेफरेंस हैज टू बी टेकन फ्रॉम आर्टिकल 12 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट. एंड फंडामेंटल राइट की जब बात करें, सो दे आर एनफोर्सेबल इन नेचर. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कल स्टेट आपको या मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ लाइफ या फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट है, अगर स्टेट आपसे या मुझसे ले लेती है, सो एज अ मैटर ऑफ राइट यू एंड मी कैन अप्रोच टू द कोर्ट एंड कोर्ट हैज टू एनफोर्स इट because state has taken that fundamental right from us. But on our other side, if I talk about directive principles of state policy, आप या मैं एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट में नहीं जा सकते. द रीजन बीइंग दैट दे आर द नॉन एनफोर्सेबल नेचर, राइट. Third important thing that you have to remind, that you have to keep in your mind is fundamental rights are negative in nature, whereas DPSP are positive in nature. Why I am saying that fundamental rights are negative in nature? The reason is fundamental rights always start with the word that the state shall not do this thing, whereas the DPSP states that the state shall do this thing. So I hope this is clear to you all कि जब हम बात करते हैं fundamental rights की, so it is negative rights. If we talk about DPSP, so they are our positive rights. Now DPSP, they are basically borrowed from Irish constitution, and Dr. B.R. Ambedkar, he described DPSP as the novel feature of the constitution, and whatever is stated in the preamble, DPSP is fulfilling all the objective given in the preamble. बट आप इससे अब ये नहीं कह सकते कि DPSP कम इम्पोर्टेंस वाले हैं और फंडामेंटल राइट्स मोर इम्पोर्टेंस वाले हैं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. If you talk about Article 45 of DPSP, so it states that the state shall provide free education to all the children. So DPSP को ही देख के, DPSP जो है ये बेसिक होता है, इसी को देख के एक लॉ बनाया गया which was added in the fundamental right by 86th amendment 2002, which states that the state shall provide free and compulsory education to all the children who are from the age of 6 to 14 years. Now let's discuss the features of DPSP. It says Article 37 states that DPSP are non-enforceable in nature. Students, आप ये समझ चुके हैं कि DPSP जो है वो क्या है, वो non-enforceable है. आप या मैं स्टेट के अगेंस्ट एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं जा सकते उसकी एनफोर्सेबिलिटी के लिए. बट
They are fundamental in the governance of our country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making law. The interesting fact about DPSP is that whenever the parliament has to formulate a law, DPSP has to be kept in mind because they are fundamental in the governance of the country, and they aim at social, political, and economic justice in the country. And they resemble इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. कहने का मतलब क्या है, जो चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से दी हुई थी, वही सेम चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड की गई इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950. As I already told you, that DPSP are the positive obligations of the state. As you all know the reason, they are not saying any instruction to the state in a negative sense, rather it is giving instruction to the state in a positive manner. You can see the classification of DP in front of you. It is classified in three parts: socialistic principle, Gandhian principle, and liberal intellectual principles. So you can see socialistic principle में article 38, 39, 39A and so on are taken up. And for example, welfare of the state, leaving work, etc. for workers. Now these all are socialistic principle which the state has to keep in mind. अदर साइड इफ आई टॉक अबाउट गांधीयन प्रिंसिपल, सो जो भी गांधी जी की सेइंग्स थी, these all sayings are given in DPSP, and whenever any law has to be formed, all these principles has to be taken up. For example, organization of village panchayats. You know that panchayats has been added in the constitution by 73rd amendment 1993, whereas municipalities were added by 74th amendment 1993. So ये क्या है हमारी, ये है गांधीयन प्रिंसिपल. थर्ड कैटेगरी इज लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल. नाउ इसका बेसिस क्या है, ये लिबरल प्रिंसिपल दे रहा है. इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड. इट सेज दैट देयर शैल बी वन कॉमन लॉ फॉर ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. स्टूडेंट्स, आप ये चीज जानते हैं कि डीपीएसपी दे आर नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर. सो इसका मतलब क्या हुआ, आप या मैं एज अ मैटर ऑफ राइट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि स्टेट इसको एनफोर्स नहीं कर रही है, बिकॉज it is at the complete discretion of the court whether to enforce any of the DPSP or not. Moving to next slide, there's a question that must be coming up in your mind also कि अगर DPSP इतने ही important हैं तो इनको non enforceable क्यों रखा है, right? So the answer to this question is, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया जा रहा था, हर चीज को एनफोर्स करना पॉसिबल नहीं था. सो उस टाइम दो कैटेगरीज बनाई ड्राफ्ट्समैन ने. वन कैटेगरी वाज फंडामेंटल राइट्स विच वर द बेसिक राइट्स जो मिलने ही चाहिए. एक कैटेगरी और दे दी गई जिसका नाम था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पर्पस ये था कि जब नीड लगेगी तो इन डीपीएसपी को भी एनफोर्सेबल एट लेटर स्टेज कर दिया जाएगा. उसमें से कुछ डीपीएसपी एनफोर्स किए भी गए हैं. फॉर एग्जांपल विलेज पंचायत्स और एजुकेशन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14. So what we can say is DPSP is the basic of any of the right or law that is being framed by the constitution. Lastly, I will be dealing with the difference between fundamental right and directive principles of state policy. The first difference is about the enforceability. As you already know that fundamental rights are enforceable, DPSP are non-enforceable. And for your knowledge, DPSP are non-enforceable and fundamental right, where they can be enforced? They can be enforced under Article 32 in Supreme Court, whereas under Article 226 in High Court. Second point is, fundamental rights constitutes limitation upon state action, which is kind of negative right, whereas DPSP, it is a kind of instruction to the government that they have to achieve certain ends by their decision. Third is, whenever any law is being framed which is in contravention with the fundamental right, so judiciary can get it declared void, but this is not the same case with the DPSP. अब students, आपको इस point को याद करने के लिए मैं एक case refer कर रही हूँ. The name of the case is
Shreya Singhal versus Union of India 2015. Now, in this case, Section 66A of IT Act was challenged on this base that it is trying to curtail Article 19 of Fundamental Rights. I'm repeating it again. Section 66A of IT Act was challenged on the basis that it is violating Article 19, that is freedom of speech and expression of the individual. So, in this, after this case, in the case of Shreya Singhal versus Union of India, Supreme Court struck down the Section 66A of IT Act. The reason being, it is violating and contravening one of the fundamental rights. And last but not the least, whenever any conflict is there between fundamental right and DPSP, usually the priority is given to fundamental rights. Whereas DPSP is not given as importance, but students आपको ये याद रखना है जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स आया from 1950 to 1980 there were disputes although on this thing कि कॉम्प्लीमेंट्री रखा जाए या इनको एक दूसरे के ऊपर प्रिविलेज दी जाए. सो फाइनली इन द केस ऑफ मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट fundamental rights and DPSP are supplementary and complementary to each other, and there should be no supremacy given to each of them. The reason being, they both are the important part of the constitution, and whenever any law has to be framed, the state has to keep in mind about the basic features that are given in the form of DPSP. That was all about Directive Principle of State Policy. See you in next video. Thank you.